So liver 7 is the pass gate point of knee. हमारे घुटने का ये पास गेट पॉइंट है लिवर 7। कहां होता है, पहले ये समझना होगा कहां होता है। इफ यू नो द लोकेशन ऑफ स्प्लीन 9, अगर आपको स्प्लीन 9 की लोकेशन पता है तो उसका ठीक पीछे होता है। सो फर्स्ट वी शुड नो द लोकेशन ऑफ स्प्लीन 9। वी कैन सी ऑन द बॉर्डर ऑफ द अपर मोस्ट बॉर्डर ऑफ दिस टिबिया बोन। अगर हम टिबिया बोन के बॉर्डर को फील करते हो जाए तो जहां पर ये खत्म होता है डिप्रेशन and bony part is start after this point. So this is the spleen 9. This is the location of the spleen 9, right? Once we know the location of the spleen 9, एक बार हमें spleen 9 की लोकेशन पता चल गई, उसी के नीचे होता है liver 7. Let's see the location of liver 7. So if we are looking here, this is the tibia bone. ये हमारी tibia bone है. So we are palpating the tibia bone like this. हम tibia bone को ऐसे palpate करते हैं ऐसे ऐसे. Where we see, oh, this ending the bony part start. So this is the location of spleen 9, right? ये हमारे spleen 9 की location है. The liver 7 is Vanchun back. Okay, so look at here. Now you can find in this image, अब आप इस image में देख पाएंगे कि हमने दोनों point आगे पीछे लिखे हैं. The liver 7 is the very good point for the knee. It is the pass gate point of the knee, and it's dispersing the bind. ये बिंड को निकालता है और यहां पर नर्व पेन है उसे भी कम करता है. Whether the pain of the knee or the swelling of the knee, in both condition it's working. Sometimes it's work very very fast. Surprisingly, you can see the very good results just by liver 7. कभी कभी आप एकदम से आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि तुरंत फायदा हो गया इस पॉइंट के माध्यम से. Now, so this point found on the medial side. ये हमारा point medial side में है, right? Look at this image. This is the tibia bone. ये हमारे पैर की tibia bone है. This is the bony part which is called medial condyle of the tibia. ये जो bony part है इसे medial condyle of tibia कहते हैं. इसी के ठीक नीचे और पीछे की ओर है. इसी के ठीक नीचे और पीछे की ओर पॉइंट लोकेटेड है, राइट? So what we are telling, we can explain in this way. From the medial condyle of the tibia, we are going down. That is the spleen 9, and the back is liver 7. Now the liver 7 is a very good point for the vein of the leg. हमारे पैरों में veins का बड़ा अच्छा point है, जैसे कि varicose vein. And not only varicose vein, even the thrombosis of the vein, we can see there are multiple veins make the thrombosis. Sometimes we have seen this types of the vein. So liver 7 is very good point for that purpose. यानी पहला ये हमारे घुटने का पास गेट पॉइंट है. दूसरा ये हमारी पैरों में पाई जाने वाली वेन की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, जैसे कि वेरिकोज वेन और थ्रोम्बोसिस ऑफ द वेन. दिस द VT of the liver 7. It's a very good point for knee as well as the veins of the leg. Now look at here. Again, here we have demonstrated this is the tibia bone. ये हमारी टिबिया बोन है पैरों में. अंदर की जो मोटी बोन होती है इसे टिबिया कहते हैं. Now you can see here in the tibia bone, this is called lateral condyle and this is called medial condyle. ये medial condyle के नीचे तो होती है. So this is the medial condyle. This point is located just, spleen 9 is located just below the medial condyle, and Vanchun back, that is a liver 7. Now look at in this image. अब आप इस image में देखिए. Right?
In this image, you can see this is the muscle. ये हमारी calf muscle है, calf muscle है, right? So when we are putting the point, this point is going in this muscle, gastrocnemius muscle or the calf muscle. Look at here. So look at my leg. So we can see, we can palpate the bone. We can palpate the border of the bone. And when this border is ending, we can feel this medial condyle of the tibia bone. ये जो bony part है, इसे tibia bone का medial condyle कहते हैं. Bony part, we can see bony part. So this is the spleen 9. From there, we have to go one chun down, that is liver 7. Now liver 7 point coming on the muscle, that is the calf muscle. ये calf muscle पर आ रहा है. So that is called gastrocnemius muscle. Gastrocnemius muscle. So when we are putting the needle here, it's also relaxing the gastrocnemius muscle, and many times knee pain is the result of disharmony in the gastrocnemius muscle. So we are putting 1 point here on the liver side. So what do? You press this point and found the most tender point here and do the stimulation. एक अच्छा टेंडर पॉइंट पाकर आप उसे स्टिमुलेशन करिए. एक निडल लगाने से कभी कभी घुटने का दर्द चला जाता है, एक निडल से, और वो निडल जाती है आपकी काफ मसल में, और या फिर आप उसे एक्यूप्रेशर कर दो. कल हमने समझा था ये वाला मेथड. रिमेंबर? गॉट इट? वेरी पेनफुल. यस, घुटने का दर्द होगा, इस पॉइंट पर काफी टेंडरनेस मिलेगी. आपको मालूम है जो लोग फेशिया एक्यूपंक्चर करते हैं उनकी एक निडल तो यहीं पर जाती है. they are relaxing the gastrocnemius muscle. Yeah, we can do. Yes, we can do on both the side also. If the person is having knee pain on the both side, we can do that, right? Okay. So finally, we have understood about the liver 7. Liver 7 is a very good point for knee pain, कि हमारा ये घुटने का बहुत ही स्पेशल पॉइंट है. नंबर 2, वेरिकोज वेन्स, हमारे पैर में पाई जाने वाली सभी वेन्स का भी बहुत ही स्पेशल पॉइंट है. So liver 7 is a very good point for number 1 condition. It's a very good point for swelling and pain of the knee. हमारे पैरों में, घुटने में होने वाली सूजन के लिए और दर्द के लिए, because it's the passgate point of the knee, right? And dispersing the wind from there. And even the nerve pain, it's very useful. The second, I told you, it's a very good point for the veins of the leg, whether the thrombosis of the vein or the varicose veins, right? फिर हमने बात की इस मसल की. ये मसल है, काफ मसल है, जिसे गैस्ट्रोक्नेमियस मसल कहते हैं. इसमें निडल जाएगी हमारी तो हमारा घुटना रिलैक्स होगा. You can see in other image, look at here. So now look at here. You can see this is the gastrocnemius muscle. Can you see how this muscle is becoming the part of the knee? आपके घुटने को कैसे होल्ड कर रही है. Many time knee pain because of this. If I remove this, you can see this is the knee. ये क्या है? knee है. So gastrocnemius muscle is very important muscle. Got it?